नमस्कार, मैं योगाचार्य नवीन प्रसाद निराला आप सभी का स्वागत करता हूं 30 डेज योगा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में। आज डे 11 है और आज हमारा विषय है हार्मोनल बैलेंस योगा। हमारे शरीर में हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, मूड, एनर्जी लेवल को बैलेंस करना, स्लीप साइकिल को बेटर करना या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करना। जब शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब कई समस्याएं दिखाई देने लगती है। लगातार फटीग होना, अचानक वेट गेन या अचानक वेट लॉस होना, मूड स्विंगिंग होना या पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होना, थायराइड डिसऑर्डर प्रॉब्लम या फिर इरेगुलर पीरियड, इस तरह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और अनहेल्दी डाइट के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग और नेचुरल प्रैक्टिस कार्टिसोल कम होता है, जिससे स्ट्रेस कम होते हैं और शरीर की हार्मोनल रेगुलेशन बेटर होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम रेगुलर रूप से जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे इम्पैक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। जैसे कि आप बात करें तो थायराइड ग्लैंड और हार्मोनल सिस्टम को सक्रिय करने में सहायता करते हैं। प्राणायाम, यदि हम बात करें तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, जो थायराइड जैसे प्रॉब्लम या फिर इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करती है, मन को शांत करते हैं और हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करती है। महिलाओं के लिए योग विशेष रूप से लाभकारी है। रेगुलर प्रैक्टिस से पीसीओएस और मेनोपॉज जो प्रॉब्लम होती है उसमें सुधार देखा जा सकता है। इसके अलावा योगा हमारी डायबिटीज को भी मैनेज करती है। इसके अलावा जो हमारा योगा है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर बनाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में भी काफी लाभ मिलता है। इसीलिए यदि हम नियमित रूप से योग, प्राणायाम और मेटाबॉलिज्म को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लें तो यह हमारे हार्मोनल हेल्थ को बेटर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन याद रखें, योग को हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में अपनाना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस, बैलेंस डाइट और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल हमें होलिस्टिक हेल्थ की ओर लेके जाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं डे 11 हार्मोनल बैलेंस प्रैक्टिस। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस 30 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 2030 तक 1 मिलियन लोगों को योग से जोड़ना, ताकि वो जो है मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सके। तो शुरुआत करते हैं आज का हार्मोनल बैलेंस योगा प्रैक्टिस। तो सीट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, चाहे वो पद्मासन हो, हाफ पद्मासन हो या सुखासन में। बैठने के बाद दोनों हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान आपकी श्वास पर, श्वास पे। श्वास लेंगे, श्वास बाहर, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, इनहेल, एक्सहेल, ब्रेथ इन, breath out. Now let's start. Abdomen breathing. Inhale abdomen outside, exhale abdomen inside. Breath in, exhale. सांस लेते हुए उदर प्रदेश को बाहर की ओर ले जाएंगे, सांस बाहर करते हुए अंदर की ओर। ब्रेथ इन, बाहर, ब्रेथ आउट, अंदर। इनहेल आउटसाइड, exhale inside. Breath in, breath out, inhale, exhale. Now focus on your chest region. Inhale chest expand, exhale compress. Breath in, breath out, inhale, exhale, breath in, breath out, inhale, exhale, breath in, breath out. Let's start clavicular breathing. Focus on your shoulder region. Inhale, shoulder up, exhale, shoulder down. Breath in,
breath out, inhale, exhale, breath in, breath out, inhale, exhale, breath in, breath out. Now let's start yogic breathing. Inhale, abdomen outside, chest expand and shoulder up. Exhale, shoulder down, chest compression, abdomen inside. Inhale, exhale, breath in, breath out. Inhale, exhale, breath in, breath out. Inhale, exhale, breath in, breath out. Inhale, exhale. Now chant 3 times Omkara. Inhale. Again inhale. Again inhale. Now join your both palm, come to Namaskarasana. Chant 1 time Sahana Bhavatu. Om Shahana Bhavatu Shahano Bhunatu Sahaviryam Karivavahe Tejasvinam Dhanitamastu Ma Vidusavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm, touch your face, 3 times open and close your eyes. Look your palm. Namaste and welcome in today's session. Namaste. Now, firstly, let's start neck movement. Inhale, head up, exhale, head down. Inhale, exhale. This is very good for cervical problem. It is very good for also for thyroid issue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, head down in left side, inhale, head up, exhale down in right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now turn your face in left side, inhale front, exhale right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now try to touch your chin with the collarbone. Make the rotation. Inhale, head back. Exhale, head down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reverse rotation. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now rub your palm, touch your neck and touch your throat. Now release and relax. Now keep your both hands on your shoulder. Let's start shoulder rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now release and relax. Now keep your right hand on your left knee, left hand back side, twist your body left side, inhale front, exhale right side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now turn in left side and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and exhale right side, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale, look front. Let's just start butterfly. Start butterfly. Now release and relax. Relax. Now both legs straight. Shake your leg. Shake your leg. आपको पूरा दिख रहा है चेहरा? पूरा पाँव दिख रहा है आपको? Now release and relax. Now bend your leg. Come to in Vajrasana. Now inhale. Open your leg. Now inhale, both hands up. Exhale down. Come to in child pose, Sasankasana, and hold. 1, 2, 3, 4. दिख रहा है सही से? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale, both hands up. Exhale down, hands down. Now next one, both legs straight. दिख रहा है? Now bend your left leg, Bakrasana. Inhale, both hands up. Turn your hands in right side, so left side. Twist your body left side. Keep your right hand beside the foot. Hold. 1. This is very good for diabetes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale, both hands up. Exhale down. Leg straight. Change your leg. Bend your right leg. Inhale, both hands up. Twist your body right side and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale, both hands up. Exhale down. Leg straight. Relax.
Now, inhale both hands up. Exhale down. Come to in child pose. Inhale, slide body forward. Come to in cobra. Now, exhale mountain. Now, inhale cobra. Exhale mountain. Inhale cobra. Exhale mountain. Inhale cobra. Exhale mountain. देखिए उधर सही से दिख रहा है. Inhale cobra. Exhale mountain. Inhale cobra. Exhale mountain. Now inhale cobra and hold. 1, 2, 3. Smile on your face. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale mountain and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now drop your knee, come to in child pose and relax. Now inhale both hands up, exhale hands down. Now ready for Surya Namaskar. So firstly come front of the mat. मैट के सामने में आएंगे, चाहे उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इस साइड में रहेंगे. नाउ इनहेल बोथ हैंड्स अप, नमस्कार स्थिति. एक्सहेल कम टू इन नमस्कार स्थिति. नाउ इनहेल बोथ हैंड्स अप, आर्क योर बैक. एक्सहेल पादहस्तासना. नाउ इनहेल राइट लेग बैक. नाउ लेफ्ट लेग बैक, कम टू इन दंडासना. Now drop your knee, chest down, chin down. Ashtanga Namaskar. Now inhale, chin up, chest up, come to in cobra. Exhale, mountain. Now inhale, right leg front between the both palm. Now left leg front beside the right leg. Now inhale, arch your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now again inhale, both hands up, arch your back. Exhale, Padhastasana. Now left leg back, right leg front. Now right leg back, come to in Dandasana. Now drop your knee, chest down, chin down. Now inhale, chin up, chest up, come to in Cobra. Exhale, mountain. Now inhale, left leg front between the both palm. Now right leg front. Now inhale, arch your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now third round, inhale, arch your back. Exhale, Padhastasana. Now inhale, right leg back. Now left leg back, Dandasana. Then drop your knee, chest down, chin down. Now inhale, chin up, chest up, Cobra. Exhale, mountain. Now inhale, right leg front. Now left leg front. Now inhale, arch your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now fourth round, inhale, arch your back. Hastottanasana. Exhale, Padhastasana. Now left leg back. Then right leg back, Dandasana. Then drop your knee, chest down, chin down. Now inhale, chin up, chest up. Exhale, mountain. Now inhale, left leg front between the both palm. Now right leg front beside the left leg. Now inhale, arch your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now fifth round, inhale, arch your back. Exhale, Padhastasana. Now inhale, right leg back. Now left leg back, Dandasana. Now Ashtanga Namaskar. Now inhale, Cobra. Exhale, mountain. Asusanchalan. Padhastasana. Hastottanasana. Now Namaskar Sthiti. Now sixth round, inhale, arch your back. Exhale, Padhastasana. Now inhale, horse riding pose, Asusanchalan. Now Dandasana.
Now drop your knee, chest down, chin down. Inhale, chin up, chest up, come in cobra. Exhale, mountain. Now inhale, left leg front. Exhale, right leg front. Now inhale, arc your back. Exhale, namaskar sthiti. Now seventh round. Inhale, arc your back. Exhale, padhastasana. Now inhale, right leg back. Now left leg back. Now drop your knee, chest down, chin down. Ashtanga namaskar. Now inhale, chin up, chest up, cobra. Exhale, mountain. Now inhale, right leg front between the both palm. Now left leg front beside the right leg. Now inhale, arc your back. Exhale, namaskar sthiti. Now 8th round. Now inhale, arc your back from the waist region. Hastottanasana. Exhale, padhastasana. Now left leg back, Asusanchalan. Right leg back, Dandasana. Drop your knee, chest down, chin down. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Parvatasana. Left leg front, then right leg front. Inhale, arc your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now 9th round. Inhale, arc your back. Exhale, Padhastasana. Inhale, right leg back, left leg back, chin down, chest down, Ashtanga Namaskar. Now inhale, Cobra. Exhale, Mountain. Now inhale, right leg front, Asusanchalan. Now left leg front, Padhastasana. Now inhale, arc your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now 10th round. Now inhale, arc your back. Exhale, Padhastasana. Now inhale, left leg back. Now exhale, right leg back. Drop your knee, chest down, chin down. Inhale, chin up, chest up, cobra. Exhale, mountain. Now inhale, left leg front. Asusanchalan. Exhale, Padhastasana. Now inhale, arc your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now 11th round. Inhale, arc your back. Exhale, Padhastasana. Inhale, right leg back. Asusanchalan. Left leg back, Dandasana. Ashtanga Namaskar. Now inhale, chin up, chest up, cobra. Exhale, mountain. Now inhale, right leg front. Asusanchalan. Left leg front. Padhastasana. Inhale, arc your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now last round. Inhale, arc your back. Exhale, Padhastasana. Now inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Now drop your knee, chest down, chin down. Ashtanga Namaskar. Now inhale, chin up, chest up, cobra. Exhale, mountain. Now inhale, left leg front between the both palm. Now right leg front beside the left leg. Now inhale, arc your back. Exhale, Namaskar Sthiti. Now release and relax. Lie down. Now try to touch your lower back with the mat. Firstly, bend your leg from the knee. Touch your lower back with the mat. Then leg straight and relax. Slowly inhale. Exhale. Breath in. Breath out. Inhale. Exhale. Breath in. Breath out. Inhale and exhale. Breath in and breath out. Slowly release and relax. Just focus on your toe. Ready for
Yoga Nidra. This is very good for insomnia. If you have insomnia, then also do this every day at night. Just focus on your toe, relax your toe, relax your ankle, relax your calf muscles, relax your knee, relax your thigh, relax your hip, relax your lumbar region, relax your thoracic region, relax your cervical region, relax your shoulder, relax your chest, abdomen, lower abdomen, shoulder, both arm, elbow, forearm, wrist, palm, finger. Now completely release and relax from head to toe and toe to head. Slowly inhale, exhale, breath in, breath out. Inhale, slowly inhale, exhale, breath in and breath out. Now both leg together. Now let's just start cycling 20 times and 20 times reverse. Let's start cycling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now release and relax. Relax. Now slowly inhale and exhale. Breath in and breath out. Now both leg together. Now inhale, both leg up in 90-degree Ardha Halasana and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now keep your leg in back side of the head. Hold Halasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now ready for Sarvangasana. This is very good for thyroid. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now again Halasana. Hold 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale. Ardhalasana and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale down. Now release and relax. Ready for Matsya Asana. Now keep your leg in Padmasana like this. Then head up. Keep your hands on your toe like this. Fish pose. Matsya Asana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now release. Then leg straight and relax. Now interlock your finger. Keep below the head. Then bend your leg from the knee. 1 feet gap between the both leg. Then drop your both knee in left side. Turn your face in right side. Supradrakarsan and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now inhale, both knee up. Exhale through the right side. Exhale in right side. Both knee down in right side. Turn your face in left side. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now inhale, both knee up. Now ready for Pavan Muktasana. Try to touch your thigh with the chest. Inhale, head up and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Head down. Now again inhale, head up and hold. 1, 2, hold your breath also. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Head down. Now spinal twisting up and down movement. Now turning left side or right side. Now release and relax. Leg straight and relax. Now release. Turn in left side and sit down in any comfortable position. Keep your left hand down below the head. Keep your right hand beside the chest on the floor. Then sit down. Now, firstly sit in Vajrasana. This is very good for uh, diabetes, type 2 diabetes.
Mandukasana. So close your finger, thumb inside, keep your hand beside the abdomen, then inhale and head down, head up and hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now head up. Now inhale and exhale, go down, head up, hold here. 1, 2, 3, normal breathing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now inhale and exhale. जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस है, ये सब आसन बहुत ही हेल्प करने वाला है। खास करके बटरफ्लाई का जो अभ्यास करेंगे, दैट इज वेरी गुड फॉर पीसीओडी पीसीओएस। सो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस ऑल्सो। और जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है वो मंडूकासन कीजिए। और मंडूकासन खास करके प्रेग्नेंट लेडीज और जिनको पीरियड आया हुआ है, ऐसे लोग मंडूकासन का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगला अभ्यास हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम या कपालभाति जो अभ्यास है, जो षटकर्मा कपात है, उसको हम करेंगे। तो 30 स्ट्रोक 5 टाइम्स, जस्ट फोकस ऑन एक्सलेशन एंड एब्डोमेन इनसाइड फोर्सफुली, ओके, एंड फोकस ऑन एक्सलेशन, इनहेल will be happening automatically. Okay, so 30 stroke 5 times. Let's start. Then head up, slowly inhale and exhale, breath in and breath out. जिनको हाई बीपी रहता है वो कपालभाति के अभ्यास को नहीं करेंगे। नहीं मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास को करने से उनका बीपी और बढ़ जाएगा और स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। तो कपालभाति का अभ्यास जिनका बीपी हाई रहता है ऐसे लोग नहीं करेंगे। और यदि आप करते हैं तो किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर गाइडेंस में करेंगे। दैट मीन्स यदि योगा इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, योगा थेरेपिस्ट बोल रहे हैं कि आपको कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, तो करना है और बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली करना है, ताकि आपके बीपी जो है वो बैलेंस में रहे। और इसके साथ ही जब हम जिनका बीपी रहता है उसको साथ में जो है शीतली शीतकारी प्राणायाम भी करवाना होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कपालभाति का अभ्यास जिनको बीपी रहता है उनको नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड कपालभाति। Now again start third round Kapalbhati. Now again start fourth round Kapalbhati.
Now again start last round Kapalbhati. Slowly inhale, exhale, breath in and breath out. Inhale and exhale. Now let's start अनुलोम विलोम प्राणायाम. देख लीजिए कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम. लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से, इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ टच करेंगी, राइट हैंड को के जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बैंड करेंगी, अपने थंब को टच करेंगे राइट नोस्ट्रिल के साथ, इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे. इसी अभ्यास को दोहराते रहेंगे. Now exhale to the left side, then drop your hand. Inhale through the both nostril and exhale through the both. Now ready for Nadi Shodhan Pranayam. Now same practice. Inhale through the left side. Now close your nostril, head down and hold your breath as much as your capacity. Then head up and exhale to the right. Then close your nostril, head down. Head up. Inhale from the right side. Close your right nostril, head down, hold your breath. Head up and exhale to the left side. This is known as Nadi Shodhan Pranayam with holding. Keep continue.
Exhale to the left side, then drop your hand. Now, let's start Ujjayi Pranayam. Contract your throat. Inhale through the nostril, create the vibration in your throat. Head down and hold your breath. When you need to exhale, firstly head up and exhale through the nostril. Now again start Ujjayi Pranayam. Now release and relax. Now ready for Bhramari Pranayam. Close your ear with the thumb, middle finger on your eyes, index finger on your forehead, ring finger below the nostril, little finger below the lip. Create the humming sound 6 times. Hands down. Feel the vibration sensation in your mind and entire the body. And a smile on your face. Slowly inhale and exhale. Breath in, breath out. Inhale, exhale,
breath in and breath out. Now chant 1 time Omkara and 3 times Shanti, Shanti, Shanti. Then in the class, inhale. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palm, touch your face, touch your whole body. Again, rub your palm, touch your face 3 times, open and close your eyes. Look your palm. Namaste and thank you for today's session. Namaste. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने पूरा वीडियो देखा है तो नीचे लिखिए कमेंट्स में कंप्लीटेड 11 डेज। और हम मिलते हैं अगले सेशन में 12 में, जिसमें हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। सेम टाइम 7 o'clock मिलते हैं कल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।